If you also want that eyes do the talking kind of makeup, then I'm gonna show you exactly how to do it step by step. So let's get straight into it. For this look, I'm gonna be using this Mars का eyeshadow palette. Basically any eyeshadow palette will work, बस उसमें ब्राउन के शेड्स होने चाहिए. सबसे पहले मैं एक न्यूट्रल डार्क ब्राउन शेड और रेडिश ब्राउन शेड को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ अपनी पूरी आईलिड पे. Then I'm taking this light transition shade और इसको मैं अपनी इनर कॉर्नर से सेंटर ऑफ द लिड तक अप्लाई कर रही हूँ. इससे आंखें और ज़्यादा बड़ी और ब्राइटन अप दिखती हैं. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्राउन शेड और इसको मैं अपनी आउटर कॉर्नर पे ऐसे वी शेप में अप्लाई कर रही हूँ. एज यू कैन सी आउटर कॉर्नर पे डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करने से मेरी आंखों में एक डेप्थ ऐड हो गई है. इससे पहले मेरी आंखें एकदम फ्लैट लग रही थी. देन मेरी पैलेट में जो डार्केस्ट ब्राउन शेड था उसको लेके मैं अपनी लैश लाइन के जस्ट ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा स्मोकी लाइनर जैसा लुक देने के लिए. अप्लाइंग द सेम लाइट ट्रांजिशन शेड थोड़ा सा और अपने इनर कॉर्नर्स पे. नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग आईलाइनर और मैं सिर्फ आउटर और इनर कॉर्नर पे विंग ड्रॉ कर रही हूँ. Again I'm applying the same dark brown shade जिससे कि लाइनर थोड़ा सा और स्मोकी लगे. लोअर लैश लाइन पे भी मैं सेम डार्क ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ. अप्लाइंग सम मोर काजल ऑन माई वाटर लाइन. एंड हियर्स द फाइनल लुक. इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज लाइक दिस. ताले आशी, see you in my next one. Bye.